नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास पब्लिक, देखो पब्लिक फाइनेंस पढ़ रहे हैं हम, सेकंड ईयर का वो है आपका टॉपिक है, सब्जेक्ट है, ठीक है। इंडियन पब्लिक यूनिट 5 आपकी स्टार्टिंग पेज के साथ आज से आपकी, ठीक है। दैट इज यूनिट 5 का नाम है इंडियन पब्लिक फाइनेंस, ठीक है। तो अब तक हमने पब्लिक फाइनेंस के बारे में सब कुछ पढ़ा था। अब हम लोग इंडिया से, इंडिया के जो पब्लिक फाइनेंस चल रहा है, जो भी गवर्नमेंट रूल कर दिया है, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये टॉपिक है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो हमारे लॉ में क्या क्या काम गया है आपके फाइनेंशियल बात को लेकर, अपने फाइनेंस को लेकर। तो 5 मेन एस्पेक्ट्स हैं इसके, ठीक है। तो देखिए पढ़ते हैं आज नंबर 1 डिवीजन ऑफ फंक्शंस, ठीक है। डिवीजन ऑफ फंक्शन में कैसे बेटा, डिवीजन ऑफ फंक्शन में गवर्नमेंट के जो इसके पब्लिक गवर्नमेंट के जो फंक्शंस है वो डिवाइड कर दिए गए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ काम देती है, स्टेट गवर्नमेंट कुछ काम देती है, उसके अंदर आपकी जो इससे डिवाइड होता होगा, तो सीक्वेंस क्या कर लेते हैं बेटा, सारे सारे फंक्शंस इन लोगों ने क्या कर लिए, डिवाइड कर लिए, ठीक है। कोई टैक्स स्टेट गवर्नमेंट आपका कलेक्ट करती है, कोई टैक्स आपका सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, कुछ खर्चे स्टेट गवर्नमेंट के हैं तो कुछ खर्चे किसके हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के, ठीक है। तो वही सब चीजें आज पढ़ाएंगे आपको, देखिए। The fiscal powers and functions responsibilities in India have been divided between central and state government follow this principle of federal finance, ठीक है। तो किस किस के बीच में डिवाइडेड आपका ये पब्लिक फाइनेंस का जो भी है या जो भी वर्क है सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। The division of functions is specified in the 7th schedule of the Constitution in three lists, ठीक है। तो आपका जो ये कॉन्स्टिट्यूशन के जितने फंक्शंस हैं इससे रिलेटेड आपके 7th schedule में कॉन्स्टिट्यूट किए गए हैं, ठीक है। कैसे लिस्टेड है ये, थ्री लिस्ट है इसकी कॉन्स्टिट्यूशन में। The one is union list, state list and corporate list। union list आपकी ऑल ओवर द कंट्री, मतलब इससे आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेट करेगी, स्टेट और स्टेट लिस्ट आपकी स्टेट गवर्नमेंट से रिलेट करेगी, और कॉर्पोरेट आगे हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो यूनियन लिस्ट कंटेन 97 सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, कितने यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट्स हैं आपके, 97 सब्जेक्ट्स, ठीक है। किससे रिलेटेड, नेशन से रिलेटेड। सच एज डिफेंस नेशनल लेवल पे देखा जाता है, रेलवे आपके नेशनल लेवल पे देखे जाते हैं, नेशनल हाईवेज हो गया, नेविगेशंस हो गए, एटॉमिक एनर्जी एंड पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स, टोटल मिला के 97 सब्जेक्ट्स है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं आपकी स्टेट लेवल की, ठीक है, तो 66 आइटम आपके स्टेट और लोकल इंटरेस्ट में, सच एज लोअर गवर्नमेंट टेक करना स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है, पब्लिक हेल्थ स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है, एग्रीकल्चर आपका स्टेट गवर्नमेंट के, इरिगेशन स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है, पावर, रूरल कम्युनिटी डेवलपमेंट एक्सेट्रा हैव बीन इंस्ट्रक्टेड टू द स्टेट गवर्नमेंट। इससे रिलेटेड आपके स्टेट गवर्नमेंट जितना भी नेशनल लेवल पे काम होगा वो इससे रिलेटेड है सेंट्रल गवर्नमेंट से, और जो स्टेट लेवल पे काम होगा उससे रिलेटेड आपका स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड है, ओके। 47 items such as industrial and commercial monopolies, 47 item है इंडस्ट्रियल कमर्शियल monopolies, इकोनॉमिक, सोशल प्लानिंग, लेबर वेलफेयर, तो ये आपका किसी जस्टिस, ये सब चीजें किसमें आएंगी आपकी कॉन्करेंट, इसमें आएंगी कॉन्करेंट, इसमें आएंगी द concurrent list is one in which both state and central can make legislation। concurrent government को लिस्ट कौन सी है जिसमें दोनों स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलकर काम होना, ठीक है। तो वो कौन सी आपकी concurrent list है। however in case of a conflict or tie, ठीक है, अगर conflict अगर दोनों का मतलब आप एक दूसरे बात में राजी नहीं हो रहे या फिर टाई हो रहा, मतलब दोनों एक बात में राजी हो रहे हैं फेडरल लॉ में, सो आपको कौन देखना है, फेडरल लॉज को देखना है, ठीक है। नेक्स्ट है रिवेन्यू पावर्स ऑफ द सेंटर। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज बीन गिवन पावर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्सेस एंड इनकम टैक्स, ठीक है। तो आप देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कौन कौन सी अपनी रिवेन्यू की पावर्स है, टैक्सेस की, कौन कौन से टैक्सेस की, इनकम टैक्स, ठीक है। अदर देन एग्रीकल्चर इनकम भी वो नहीं लेते, कस्टम ड्यूटी वो नहीं लेते, एक्साइज ड्यूटी सेंटर, ठीक है। तो ये इनके अलावा इनकम टैक्स किसके पास है बेटा, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, ठीक है। इसके साथ एग्रीकल्चर इनकम, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी ऑन टोबैको एंड अदर गुड्स मैन्युफैक्चर्ड प्रोड्यूस इन इंडिया, कॉर्पोरेशन टैक्स, ठीक है, टैक्सेस ऑन कैपिटल वैल्यूज, एग्रीकल्चर लैंड, एस्टिमेट
paid by railway, sea or air, taxes under the stamp duties on transaction in stock exchange जो कि आपकी stamp duty होती है, future market, ठीक है, stamp duty in respect of land etc. Okay, taxes on sale purchase of newspaper on advertisement published therein, sale purchase of consignment of goods involving interstate of commerce, interstate trade war, ठीक है. In fact, the central government does not get revenue from all of above taxes. तो इसमें इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट इतने सारे टैक्सेस होते हुए भी सेंट्रल गवर्नमेंट इतने सारे कलेक्ट नहीं करती. Okay. These revenues can be divided into four categories on the basis of levy. ठीक है, चार कैटेगरी में बांटते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन एंड द एक्रूअल ऑफ इनकम एज follows. ठीक है, तो पढ़िए. Taxes that are levied, collected and retained by the central government, for example, corporation tax and custom duties. The taxes that are levied and collected by the central government but shared with the state. ठीक है, इस बात को सेंट्रल लेवल पे कलेक्ट, लेकिन क्या करते हैं आगे सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, स्टेट गवर्नमेंट को शेयर करा देती है. ठीक है, फॉर एग्जांपल नेट प्रोसीड फ्रॉम union excise duties under Article 270 and the net proceeds from union excise duty under Article 272 respectively. ये दोनों जो है ये लेवी काउंट के है, रिसीव काउंट के सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है बाद में इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देती है टू द स्टेट गवर्नमेंट. ओके, taxes that levied and collected by the center but whose net proceeds are assigned to the state. ठीक है, वो उसका तो कुछ पार्ट गवर्नमेंट देती, लेकिन अब जो है ये राज्य की सेंट्रल गवर्नमेंट है, कलेक्टर भी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, लेकिन सारा का सारा पूरी नेट प्रोसीड की आपकी क्या हो जाती है, इसको चली जाती है स्टेट गवर्नमेंट को चली जाती है. क्या क्या एग्जांपल है इनके, द 8 आइटम अंडर आर्टिकल 269 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सच एज स्टेट ड्यूटी तो आर्टिकल 269 के अंदर आती है. रेलवे पैसेंजर फेयर जो होता है आपका वो स्टेट गवर्नमेंट का होता है, हो जाता है, कलेक्ट करके सेंट्रल गवर्नमेंट बस हो जाता है स्टेट गवर्नमेंट का. फ्रेट जितने भी आते हैं, कंसाइनमेंट टैक्स जितना भी आता है वो कौन रखता है, आपका स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है, आता है सेंट्रल के पास, लेकिन सारा किससे ट्रांसफर कर दिया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दिया जाता है. ठीक है, टैक्स लेवी on the by the center but allocated and appropriated by states. ठीक है, लेवी तो सेंटर करता है, लेकिन उसको एलोकेशन और एप्रोप्रिएशन कौन करता है, उसका स्टेट करता है, सच एज एक्साइज ड्यूटी ऑन मेडिसिन एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्सेट्रा. ठीक है, तो ये वाला एक टैक्स है आपका. थर्ड आपका रिवेन्यू पावर्स ऑफ द स्टेट. अब स्टेट की रिवेन्यू पावर, अब हमने किसकी पढ़ी थी, रिवेन्यू पावर ऑफ द सेंटर, है ना. अब हम किसकी स्टेट रिवेन्यू पावर पढ़ रहे हैं बेटा, रिवेन्यू पावर ऑफ द स्टेट. ठीक है, द स्टेट गवर्नमेंट हैव बीन गिवन exclusive tax power in respect of land revenue. Land revenue भी जितनी भी tax power होती है, जितना भी tax collected होता है, वो कहाँ चला जाता है आपका state government के पास. ठीक है, taxes on agriculture income, agriculture income का सारा जो भी tax होता है collected आपका. Duties in respect of succession of agriculture land, state duty in respect of agriculture land, taxes on land and buildings. ठीक है, exercise duty, excise duty on goods containing alcohol, liquor जो भी हम लोग उसमें excise duty देते हैं आपकी. ठीक है, human consumption का जितना भी है वो सब ट्रांसफर जाता है स्टेट गवर्नमेंट की इनकम में. Opium and Indian hemp and other narcotic drugs taxes on entry of goods into local areas, taxes on sale or purchase of goods other than newspaper, taxes on vehicles, toll tax. ठीक है, toll tax आपका, and taxes on profession, trade, callings and employment, capitation taxes and taxes on luxurious including taxes of entertainment, amusement, batting and gambling. ये सब किससे कौन कलेक्ट करता है, ये सब स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है. ठीक है, और नेक्स्ट है आपका डिवीजन ऑफ बोरोइंग पावर. ठीक है, अब हमने किसकी लगता बटे सेंट्रल का जो भी रेवेन्यू है, स्टेट की जो भी रेवेन्यू है, अब इनकी बोरोइंग पावर अभी डेट पढ़ा था हम लोगों ने, डेट क्या होता है, जितना भी गवर्नमेंट बोरो करती है. ठीक है, तो अब स्टेट गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग बोरोइंग पावर्स देख लीजिए क्या क्या है इनकी. द बोरोइंग
विद इन एंड आउटसाइड द कंट्री। तो कहाँ से सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ से फंड ले सकती है, विद इन कंट्री भी ले सकती है और आउटसाइड द कंट्री भी बोरो कर सकती है। एंड आफ्टर एज पर द लिमिट्स इम्पोज्ड बाय द पार्लियामेंट, जितना भी और लिमिट के अकॉर्डिंग करते हैं जितना कि पार्लियामेंट में आपका लिमिट इम्पोज की जाती है, लगाई जाती है। अकॉर्डिंग टू Article 293 of 3, the states can borrow funds within the country. तो state कहाँ से लेते हैं, state खाली इसमें ले सकते हैं, within the country ले सकते हैं, ठीक है, borrow कर सकते हैं, जबकि central government within the country कर सकती है और outside the country भी borrow कर सकती है। Article 293 of 2 empowers the center to provide loans to states subject to conditions laid down by the parliament, ठीक है, तो central government भी state government को loan दे सकती है, गाइडेंस के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट की गाइडेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फिस्कल इम्बैलेंसेस से रिलेटेड। इम्बैलेंसेस हम लोगों ने पढ़ लिया था। इम्बैलेंसेस किस तरह के होते हैं, या तो बजट डेफिसिट होता है या फिर क्या होता है इम्बैलेंस में सरप्लस, या तो आपकी पब्लिक इनकम पब्लिक एक्सपेंडिचर से ज्यादा हो जाती है, पब्लिक एक्सपेंडिचर आपकी पब्लिक इनकम से ज्यादा हो जाती है, यही तो इम्बैलेंसिंग होगी। तो देखिए constitutional fiscal arrangement shows that fiscal imbalances were deemed illogical as most of the powers of domestic taxes are given to the central government. Further, the division of powers and functions itself lead to multiple federal fiscal imbalance, whereby the difference in the endowment position of national resources across state also engender federal fiscal imbalances. ठीक है, ये वही बात बता रहा है आपकी से। The Canadians visualizing the fiscal imbalance in the constitutional markers makers provided a mechanism understood by the fiscal transfer from the state government to central government. तो कह रहे हैं जब भी ऐसा होता है कि फिस्कल में आपके बजट में डिफरेंसेस आ जाते हैं तो क्या होता है बच्चे, जो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को वो होता है छूट होती है कि वो एडजस्ट कर ले अपनी जितने भी फिस्कल्स हैं, मतलब जितने भी डेफिसिट्स या आपकी इनकम्स हैं, ठीक है, डेफिसिट या सरप्लस है वो स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को ट्रांसफर कर सकती है और स्टेट गवर्नमेंट इसको ट्रांसफर कर सकता है, सेंट्रल को ट्रांसफर कर सकती है। This provision in constitution was made under Article 280 by the way of setting up a finance commission for every 5 years or earlier if the President of India feels it necessary। ठीक है, तो ये प्रोविजन आपकी कॉन्स्टिट्यूशन के ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के किसमें आर्टिकल नंबर 280 में लिखा हुआ है, ठीक है, 5 साल के लिए फिस्कल कमेटी बनाते हैं आपकी, सॉरी फाइनेंस कमीशन बनाई जाती है 5 इयर्स के लिए, ठीक है, सीएम बनाते हैं ये, ठीक है, अगर उनको लगे नॉट सीएम दैट सॉरी दैट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है, इफ फील्स अगर उनको लग रहा है कि नेसेसरी है इस बार आपको फाइनेंशियल कमीशन बनाना पड़ेगा तो प्रेसिडेंट को ये पावर होती है कि वो 5 सालों के लिए फाइनेंशियल कमीशन बनाकर चले, ठीक है, जिससे कि इम्बैलेंस की कंडीशन आए। तो वो इसका उनका फाइनेंशियल कमीशन का क्या काम होता है कि अगर स्टेट के खर्चे ज्यादा हो रहे हैं, है ना, और सेंट्रल की इनकम ज्यादा हो रही है तो इन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है स्टेट में, या स्टेट्स की इनकम ज्यादा हो रही है और सेंट्रल की कम हो रही है तो स्टेट की इनकम को ट्रांसफर कर दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, ठीक है। तो ये बैलेंसिंग का काम कौन करता है बेटा, आपका फाइनेंशियल कमीशन आर्टिकल 280 में कॉन्स्टिट्यूट है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, और किसको होती है पावर ये बनाने की, आपके प्रेसिडेंट को बनने की, ओके। India has a federal form of government, therefore the system of indirect taxation which is followed by federal in nature, state tax can be considered as one of the most important source of revenue for the state in India। तो देखिए स्टेट टैक्स, सेल टैक्स जो है वो स्टेट वाइज कलेक्टेड होता है, पता आप लोगों को, है ना, ये सब
के लिए इतना ही है आपका। ओके, पढ़ लीजिएगा या तो कुछ टॉपिक देंगे, ठीक है, जिसको जॉब